Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I love electrical engineering. Today I will discuss how to do electrical wiring of a differential protection relay. एक differential protection relay में कैसे electrical wiring करना पड़ेगा, कैसे wiring करना पड़ता है. Today I will discuss on this. So basically more than 5 MVA कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगाने में कोई भी सबस्टेशन में हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कोई भी स्पेसिफिक जोन को प्रोटेक्शन देने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले. तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले में कैसे वायरिंग करना पड़ता है, टुडे आई विल डिस्कस ऑन दिस. सपोज वी आर टेकिंग ऑन 10 MVA ट्रांसफार्मर एंड DYN11 here D here star. We are on a 10 MVA transformer 33/11 kV. Percentage of impedance equal to 8.5%. So there is three phase R, Y, B. R, Y, B. And there is also three phase, there is small r, small y, and small b. So a protected, suppose this zone we have protected. So CT will be connected similarly. Suppose this is HT side CT, this is LT side CT. ये R फेस के लिए, Y फेस के लिए, B फेस के लिए, सिमिलरली R फेस, Y फेस, B फेस. तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के लिए जो सिटी टू सिटी का बीच में जो पोर्शन है, उसी पोर्शन में हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए इसको इसी पोर्शन में कोई भी फॉल्ट होगा, एलटी सिटी टू एचटी सिटी, इसी का बीच में कोई भी फॉल्ट होगा, दैट विल बी डिटेक्टेड बाय डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले. तो इसका कनेक्शन, इसमें रिले सिटी से रिले तक कनेक्शन कैसे होता है, टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस. तो सपोज इसमें दो तीन चीज अच्छा से देखना पड़ेगा. इसका वायरिंग, कनेक्शन, सिटी का पोलैरिटी एंड फेज सीक्वेंस, ये तीनों चीज पहले चेक कर लेना पड़ेगा बिफोर चेकिंग द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन. ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सिटी का पोलैरिटी एंड फेज सीक्वेंस. तो सिटी का पोलैरिटी कैसे कनेक्ट होता है, सपोज पाइपलाइन एचटी साइड में दिस इज P1 P2, देन एलटी साइड में दैट इज P2 P1. एलटी साइड में P1 P2 कनेक्टेड है, तो एलटी साइड में P2 P1 इस टाइप का पोलैरिटी कनेक्टेड होगा. सिमिलरली दिस विल बी S1, दिस विल बी S2, 1S1, 1S2, similarly 2S1, 2S2, similarly this is 3S1, 3S2. In the same way, in LT side, 11 side, that is 1S1, 1S2, that is 2S1, that is 2S2, that is 3S1, that is 3S3. Sorry, that is 3S2. So हम लोग क्या क्या जानता हूँ, जो प्रोटेक्शन जोन साइड में हम लोग को स्टार पॉइंट फॉर्म करना पड़ता है. स्टार पॉइंट शुड ऑलवेज बी फॉर्म इन प्रोटेक्शन जोन साइड. तो प्रोटेक्शन जोन साइड किसका कौन सा साइड है, ये वाला पोर्शन है प्रोटेक्शन जोन साइड. तो स्टार पॉइंट टू बी फॉर्म इन दिस पोर्शन फॉर एचटी साइड इन दिस पोर्शन एंड फ्रॉम एलटी साइड इन दिस पोर्शन. स्टार पॉइंट टू बी फॉर्म फॉर एचटी साइड इन दिस पोर्शन एंड फॉर एलटी साइड इन दिस पोर्शन. कैसा है, स्टार पॉइंट वो है
एच साइड में। सिमिलरली एच साइड में स्टार पॉइंट फॉर्म हुआ इस साइड। इधर स्टार पॉइंट फॉर्म 1s2 2s2 3s2 स्टार पॉइंट फॉर्म हुआ। सिमिलरली इधर 1s2 2s2 3s2 स्टार पॉइंट फॉर्म हुआ। नाउ सपोज दिस इज डिफरेंशियल प्रोडक्शन रिले। तो इसमें एच टी साइड सिटी से कनेक्शन करने के लिए भी टर्मिनल रहेगा, एच टी साइड सिटी के लिए भी कनेक्शन के लिए टर्मिनल रहेगा। तो सपोज मैं पकड़ लेना इधर 3 सिटी है, आर वाई फेस के लिए 3 into 2 12 6 टर्मिनल, हियर इज आल्सो 6 टर्मिनल। तो सपोज मैं 6 टर्मिनल इधर शो कर रहा हूँ। इसमें ये छोड़ के भी बहुत सारा टर्मिनल रहता है, बट पर्टिकुलर फॉर सिटी टू रिले का जो वेरिंग है ये दिखाने के लिए मैं एच टी साइड में 6 टर्मिनल दिखा रहा हूँ एंड एच टी साइड का रिले सिटी से कनेक्ट करने के लिए 6 टर्मिनल दिखा रहा हूँ। सपोज this is 1s1 1s2, this is 2s1 2s2, and this is 3s1 3s3. Similarly this is 80 side 11 पे 1s1 1s2 2s1 2s2 3s1 3s2। तो इधर हम लोग क्या किया, दैट इज एच टी साइड में 1s1 इधर आया, तो 1s1 should be connected to here, 2s2 2s2 should be connected to here, and 3s1 should be connected to here. So 1s1 रिले का 1s1 टर्मिनल में, सिटी का 2s1 2s1 also 2s2 3s1 will go to here. Similarly in LT side 1s1 will be connected to 1s1, 2s1 should be connected with 2s1, and 3s1 should be connected with 3s1. Now what we have to do, हम लोग 1s2 2s2 3s2 में 8 स्टार पॉइंट फॉर्म किया एंड इधर भी सिमिलरली 1s2 2s2 3s2 में स्टार पॉइंट फॉर्म किया। तो इसका जो 1s2 2s2 3s2 ये तीनों को शॉर्ट करके विल कनेक्ट विद द स्टार पॉइंट। सिमिलरली इन एच टी साइड 1s2 2s2 3s2 को शॉर्ट करके विल कनेक्ट विद स्टार पॉइंट, and one start point should be earth properly in field end. And this is the circuit diagram or weighted diagram of a differential protection relay.